Hello everyone, welcome to Apti Plus Academy for Civil Services. This is a video on daily news and editorial analysis, which I'll be covering from two important newspapers. The first being the Hindu and the other is the Indian Express. So the most important news and editorial of the day will be discussed in this session. Let's get started with news topic list. Today is 10th of March. The first topic is Center Approved National Land Monetization Corporation. We'll see a detail about this. Second, EU tightened sanctions on Russian blacklist lawmaker. We have seen that the invasion of Ukraine by Russia has led to a lot more economic sanctions. Third, China looks for acceptable solution on LAC, that is a line of actual control. The second last is Pharmasector worried as export to Russia and Ukraine hit. And the last is an editorial, that is water management needs hydrosocial approach. So this is an editorial, we'll look into the in-depth analysis from the Hindu. Apart from this, at the end of this video, there will be MCQ based question. These questions would be based on current affairs that will help you for the upcoming prelims examination. So without any further delay, let's get started. If you're new to our channel, do not forget to subscribe Apti Plus Academy for Civil Services on YouTube. If you like this video, if you find this video informative and helpful, do not forget to press a like button. And just to tell you about our Newsly app, this is a version 2.0 which you can download from our website. I have provided a link in the description section down below, from where you can directly redirect to the page for download this app. Do check it out. So starting with the first news of the day, that is Center Approved National Land Monetization Corporation, something which is relevant for your General Studies paper 2, that is government policies and intervention for the development of various sectors and issues arising from it, design and implementations. So what central government has did, recently the Union Cabinet has approved the formation of NLMC. What is NLMC? This is National Law Monetization Corporation. ये एक ऐसी corporation है जो कि completely owned है by government, and definitely this would aim to fast track the monetization of land, non-core assets of the public sector entities. We have seen that the government is looking forward with the disinvestment purposes of the CPC. So in that context, the government has come up with the National Land Monetization Corporation, right? This is again something which would be very relevant for your prelims examination. Now, the center has allocated the initial authorized capital for this is around 5,000 crore rupees, और paid up capital की अगर बात करें, ये है 150 crore rupees. Now, in the recent budget, इस बार जो बजट गवर्नमेंट ने टेबल किया उसमें ये अनाउंस की गई थी एक स्पेशल पर्पस व्हीकल के थ्रू इसको यूज किया जाएगा. आई थिंक मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी अवेयर ऑफ द एसपीवी. एसपीवी इज समथिंग विच गवर्नमेंट सब्सिडाइज एंड एम्स टू हैव अ इकोनॉमिक इम्पैक्ट, एंड इट शुड हैव टू हैव अ basically if you see it as special purpose vehicle, it is something which is helping government in a longer run. Now mandate क्या है NLMC की? अगर National Land Monetization Corporation की बात करें, this would definitely monetize a surplus land, जहाँ पे building assets की अगर बात करें, जो central public sector enterprises है और government के कुछ important agencies होंगे, वो इसमें incorporate किए जाएंगे, and the entire monetization corporation would be taken into account. So NLMC would be taking the surplus asset monetization as an agency fund, और ये assist करेगी in providing the technical advice in center this particular regard. Apart from this, जो strategic sale होगी, either it is a privatization of state owned company या फिर monetizations की बात की जाए, the government would come up with a strategy where it would reduce the business presence of minimum generator ratios for the future asset creation. So whole soul government is looking forward to create an asset which is valuable in nature. Now LMC will support and undertake monetization of this asset. और बात करें इसकी होल्डिंग या फिर जो मैनेज करनी है इस एसेट्स को, दिस वुड बी डन बाय द CPSC, राइट? एंड दिस वुड अगेन स्पीड अप द क्लोजर ऑफ CPSC and smoothing the strategic development which government has recently come up with many lot other companies. I'll discuss the detailed part of this, जहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी डिसइन्वेस्टमेंट की गई है गवर्नमेंट की तरफ से. So disinvestment targets की अगर बात करें, for this particular year the government has set up 1.75 lakh crore rupees as a disinvestment for the budget, but actually it was revised and the final estimation was around 78,000 crore rupees, right? अब इस बार जो बजट पेश की गई है उसमें 65,000 crore rupees की estimations की गई है, and somewhere government is expected, और जो एक amount government के पास है, they are expecting somewhere close to 78,000 crore rupees, right? So this is how by March end government is trying to incorporate all the private companies, especially LIC में भी disinvestment की बात की जा रही है. So let's see how government is moving ahead with the decision. Now privatizations by the government, we have seen some of the companies coming into the privatizations part. अभी recent में आपने देखा होगा जिस तरह से एयर इंडिया के लिए गवर्नमेंट ने टाटा ग्रुप को उसके पूरे स्टेक्स वापस किए हैं. इवन सब कंपनीज लाइक नीलांचल इस्पात लिमिटेड, निगम लिमिटेड, दिस वाज अ पार्ट. These are some of the state-owned companies and public sector undertaking which has generated the gain momentum. Now in 2021, the government has also raised 12,430
for 23 crore rupees. This number might not be important for you, but आपको एक फिगर पता होना चाहिए कि कितनी की वैल्यू की डिसइन्वेस्टमेंट हो रही है. For CPSC, they have referred almost 3,400 acre as a land, right? And this would be done by the DIPAM, that is Department of Investment and Public Asset Management. UPSC has already asked a question in the prelims examination about DIPAM. So make sure you understand the basic concept of the government working. So the rail and defense ministries are the biggest government land owner in the country. अगर पूरे जितनी भी मिनिस्ट्रीज ऑपरेट कर रही है इंडिया में, तो रेल मिनिस्ट्री और डिफेंस मिनिस्ट्री ऐसी है जिनके पास अभी सबसे ज़्यादा लैंड्स हैं. Now, this is an infograph, a basic infograph that will give you an idea about the cabinet decision that was recently taken in terms of building the National Land Monetization Corporation. So this would be under the SPV. So this is something for most important. आपको ये पता होना चाहिए कि ये SPV के अंदर है. This can be a statement in the examination. उसके बाद this is completely owned by government and they are generating the revenues under the used part of the asset. And it will definitely promote the private companies and investment to have a local bodies. So ये कुछ नहीं है, this would be something more of a public-private partnership, PPP model पे काम करने की कोशिश की जा रही है. Now moving to the other news, that is European Union tightened sanctions on Russia, blacklist the lawmakers. Something which is again relevant for your general studies paper too, that is government policies, effect of policies and politics for developed and developing countries. Now in a strong decision, Russia and European Union has agreed that जो रशिया ने अभी रिसेंटली इन्वेड किया है यूक्रेन को, उसको लेकर के यूरोपियन यूनियन अपनी डिसीजन ले रही है. एंड इन दैट डिसीजन दे हैव डिसाइडेड दैट 160 रशिया के जो बिजनेसमैन हैं और जो लॉ मेकर्स हैं उनको सैंक्शंस किया जाएगा, उनको ब्लैकलिस्ट किया जाएगा. Again, the other part that would be taken into consideration would be targeting the crypto asset, because crypto mining, apart from China, अगर China के अलावा अगर बात करें, so Russia is a country which is having a crypto mining, right? So government basically जो EU है वो चाहती है कि crypto assets को भी वहाँ पे रोका जाए, जिस तरह से रशिया ने यूक्रेन को इन्वेड किया है. So a sanction is essentially required, और ये global consensus बनी है. US के अलावे फ्रांस भी ऐसी कंट्री है which a other part of the European Union country wanted to sanction Russia. Now this is a 27 nation block country which give a go ahead system where Belarus के भी जो SWIFT है mechanism उनको भी रोकने की बात कही गई है. And Belarus is supporting the Russia attack. So if Belarus is supporting, we have seen recent में जब रशिया ने अटैक करने से पहले भी कहा था कि वो बेलारूस में मिलिट्री एक्सरसाइजेस कर रहा है, ड्रिल कर रहा है. They are not going to invade the Ukraine part. But what actually happened? Russia has finally invaded, and Belarus was a country that has acting as a supporting part, right? इसी वजह से स्विफ्ट मैकेनिज्म के अंदर बेलारूस को भी ब्लैकलिस्ट करने की बात की जा रही है. आई हैव ऑलरेडी डिस्कस द स्विफ्ट. इफ यू हैव नॉट वॉच दिस वीडियो, डू चेक इट आउट. उस वीडियो में मैंने स्विफ्ट के बारे में डिटेल में बताई हुई है. नाउ मेजर डिसीजन बाय यूरोपियन यूनियन, और क्या क्या इंपॉर्टेंट डिसीजन ली जानी है. दिस इज अ स्टेटमेंट विच इज कमिंग फ्रॉम 146 मेंबर कंट्री, वे रशिया अपर हाउसेस और पार्लियामेंट में जहाँ पे उसकी क्रेमलिन जो बिजनेस लिंक्ड ओनर्स हैं या फिर जो उनके रिलेटिव्स हैं, इन सारों की अकाउंट को फ्रीज करनी है. एंड वीजा बैन वुड ऑल्सो बी देयर. दिस वुड बी ब्लैकलिस्टेड. दिस इज व्हाट द यूरोपियन यूनियन हैज टू से, राइट. एंड द यूरोपियन यूनियन विल ब्रॉडन द स्टिकर ऑन द क्रिप्टो करेंसीज, जहाँ पे किसी इंडिविजुअल या कंपनी ओन्ड क्रिप्टो करेंसीज होंगे जो कि इनक्रिप्टेड डिजिटल सिस्टम में बेसिकली इनक्रिप्ट होती है, उनके लिए भी सैंक्शंस लगाई जाएंगे, राइट. सो दिस होल पार्ट विल बी टेकन इनटू कंसिडरेशन. फर्दर द यूरोपियन यूनियन विल प्रोहिबिट द ट्रांजिशंस. जब प्रोहिबिशन की बात करिए तो यहाँ पे स्विफ्ट के जो मैकेनिज्म है उसको भी इनकॉर्पोरेट की जाएगी, राइट. एंड दिस इज हाउ द बेलारूस मैनेजमेंट रिजर्व एंड अदर फाइनेंशियल इनफ्लोज टू द बेलारूस इन यूरोपियन वुड बी कंप्लीटली बैंडेड एंड रिस्ट्रिक्टेड फॉर n number of years. Now the other news, China look for acceptable solutions to the line of actual control. We have seen the de-escalation overgoing the India and China. So this is something, a solution look forward from the Chinese side. So something very relevant for general studies paper 2, that is India and its neighborhood relations. तो रिसेंट में चाइना की तरफ से एक ऑफिशियल कंफर्मेशन आई है कि वो मिलिट्री लेवल टॉक्स के बाद इंडिया के साथ अपकमिंग मीटिंग में सॉल्यूशन चाहते हैं. बट व्हाट इज द सॉल्यूशन वी डोंट नो, बिकॉज फॉर टाइम बिंग इंडिया ने काफ़ी सारी मिलिट्री लेवल की मीटिंग्स की है, बट वी हैव नॉट फाइंड एनी सॉल्यूशन फ्रॉम चाइनीज एंड, राइट. सो दिस एक्सपेक्टेड टू मूव फॉरवर्ड विद द लॉन्ग रनिंग नेगोशिएशंस, जहाँ पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो ईस्टर्न लद्दाख की रीजन है, राइट, ईस्टर्न लद्दाख की जो रीजन है उसमें जो एक्सकेलेशंस हुई हैं उसको सॉल्व करने के लिए, उसके लिए एक एक्सेप्टेबल सॉल्यूशंस की तरफ आगे बढ़ा जाएगा दोनों कंट्रीज की तरफ से. एंड इंडिया इज लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ पॉजिटिव सॉल्यूशन, बिकॉज वी हैव ऑलवेज सीन अ नेगेटिव इम्पैक्ट विद द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड चाइना, राइट. सो मिलिट्री लेवल टॉक्स ऑलरेडी भी हुई थी, 11 मार्च को भी हुई है. एंड इवन दे आर फोकसिंग ऑन द पेट्रोलिंग पॉइंट ऑफ द पॉइंट 15 ऑफ द हॉट स्प्रिंग. दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट लोकेशंस. सो मेक श्योर आप मैप वर्क देख लें, बिकॉज इन एग्जामिनेशन दे कैन आस्क यू एनी
point or any map regarding this particular region, right? So disengagement की अगर बात की जाए, इन द नॉर्थ एंड द साउथ पोंगोंग लेक, गालवान और जो गोरखा रीजन्स हैं, ये ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पे डिसएंगेजमेंट की बात की जा रही है और मिलिट्री को यहाँ से हटाने की बात की है इंडिया ने. लेट्स सी व्हाट डिसीजन इज कमिंग बिकॉज वी आर लुकिंग फॉरवर्ड विद सम पॉजिटिव ऑफ दिस न्यूज़. Now focusing on the friction areas की अगर बात करें, according to India defense sources जो दोनों sided हैं, they are looking forward for the Demchok and Deepsang region also. और ये recent assessment की जाएगी कि mutually expect करनी है इस चीज़ को या नहीं करनी है. Now Chinese foreign minister have said that their observations saying around of January in the both sided, it said that the China further enlarged the consensus where they are looking for a solutions to acceptable in this party. See what is basically happening. China has always made a promise, right? And their promise was not successful. So what India is doing, India is looking with a solution which is concrete in nature and not just any information coming from any official. So this is what India is looking forward with. And India and China has a relation. India and China has a relation which is mature, multidimensional in nature, right? Now working together, something very important and significant. So Chinese foreign ministers say that they are hopeful in India while they would be also following the Chinese dimension. Some of the important part and aspect of the Chinese dimension include continuously enhancing the mutual trust between two countries, strengthening the practical cooperations, ensure bilateral relationship that is moving forward in the right track, and the last but not the least is to bring out more benefit. ऐसे benefits हों जो एक contributions करे दोनों region में एक healthy relationship establish करने के लिए और military की de-escalation के लिए. So this is a part of the contribution that should be going ahead between India and basically China, right? Now the other news, that is Pharmasector worried as export to Russia, Ukraine may get hit. This is something relevant for general studies paper too, government policies and intervention for the development of various sector and issue rising from it. So we have seen that the pharma sector, जिस तरह से अभी रशिया ने यूक्रेन पे इन्वेट किया है, उसके बाद से जो फार्मा सेक्टर है which is not performing well, right? And this is a worrisome for Indian companies like Dr. Reddy, Sun Pharma. ये कुछ ऐसी बड़ी कंपनीज हैं इंडिया की जो कि यूक्रेन में भी ऑपरेट करती हैं. So what is the repercussion of the basically the ongoing war that is going between Russia and Ukraine? We'll understand that. So जो ongoing conflict है रशिया और यूक्रेन के बीच में, that has created a large impact on the global economy. ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में इसकी impact हुई है, globally we have seen the crude oil prices also rising, right? Crude oil की prices भी increase हुई है और pharma sector एक ऐसी sector है जो कि definitely बहुत ज़्यादा impact हो सकती है इंडिया में. Now India has already witnessed a massive wipe of the investor, where past few days were seen as a flagging concern in the crisis of the pharma industries, right? तो कुछ अगर जियो पॉलिटिकल क्राइसिस की अगर बात करें, जो रशिया को सैंक्शंस भी की गई है वेस्टर्न कंट्रीज के थ्रू. दिस वेस्टर्न कंट्री मोस्टली इंक्लूड यूनाइटेड स्टेट्स एंड फ्रांस एंड अदर यूरोपियन यूनियन कंट्रीज, राइट? सो दे में ऑल्सो इंक्लूड द डैमेज टू द फार्मास्यूटिकल. तो इसके रिपरकर्शन इंडिया के फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स पे भी काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं. Now, how the Indian pharma companies are operating? तो pharma companies में मैंने आपको दो कंपनी बताई. The first is Dr. Reddy and other is the Sun Pharma that is operating both in Russia and Ukraine. तो इनकी establishment ये दोनों जगह पे है. And we have seen the part of Ukraine जहाँ पे कीव जो कैपिटल है, इवन सुमी या फिर और ऐसे जो रीजन है वहाँ पे बहुत ज़्यादा रशिया ने बम्बार्डिंग की है. एंड मोस्टली अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम व्हाट दे आर लुकिंग फॉरवर्ड कि वहाँ से अपने एम्प्लॉयज़ को बाहर निकाल लिया जाए. So at the present crisis, the firm say that they are monitoring the situations and they are more concerned about the safety of their employee, right? So India's largest drug maker, that is the Sun Pharma, has also stated that they are hoping for the best outcome. By best outcome, they mean that a negotiation between Russia and Ukraine is essentially required. जहाँ पे UN Security Council में भी इसकी बातें कही गई है कि रशिया को इस तरह की चीज़ें से बचना चाहिए. Negotiation can be the only solution. नाउ इंडिया ड्रग एक्सपोर्ट की अगर बात करें, जो यूक्रेन में ड्रग एक्सपोर्ट होती है इंडिया की तरफ से, तो अकॉर्डिंग टू द फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल जो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के अंदर आती है, इनके मुताबिक $591 मिलियन जो हैं वो रशिया के पास फार्मास्यूटिकल कंपनीज एक्सपोर्ट करती है इंडिया, एंड 182 मिलियन टू यूक्रेन. सो दिस यू कैन सी दिस वैल्यू इज प्रीटी लार्ज, राइट? एंड इंडियाज ड्रग्स एक्सपोर्ट टू रशिया इज 2.4% इन द टोटल फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट, और यूक्रेन की बात करें दिस अमाउंट टू 0.7%. And it's worth adding the India's export pharmaceutical, which is around $2.5 billion for the financial year of 2021. So this is something, a brief data about the export that India is promoting in the pharmaceutical to both Ukraine as well as to the Russia.
Now, this is an editorial that is waste management needs a hydrosocial approach, something which is very relevant for General Studies Paper 3, conservation, environmental pollution, and EIA, that is environmental impact assessment. So this editorial will give you an insight about some important topic that we'll be discussing. There are 7 important subheads that I'll be discussing with you. The first is फ्रेश वाटर वैल्यूएशंस, यूएन की जो रिपोर्ट है उसको देखेंगे, इंटर बेसिन ट्रांसफर प्रोजेक्ट्स में क्या क्या बातें कही गई है, मेक यू अंडरस्टैंड दैट ऑल्सो, सम की एजम्पशन दैट इज एसेंशियली रिक्वायर्ड, यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर, ग्रे वाटर यूजेस एंड द वे फॉरवर्ड. एंड द थीम ऑफ दिस आर्टिकल इज वाटर मैनेजमेंट एंड इट कंसर्न, राइट. सो द ग्लोबल सिस्टम प्रोजेक्ट के मुताबिक अगर देखें 2003 में एक जॉइंट इनिशिएटिव ली गई थी अर्थ सिस्टम साइंसेस के पार्टनरशिप के साथ, जहाँ पे ग्लोबल इन्वायरमेंट चेंज की भी प्रोग्राम की गई थी, वेयर इट कंसर्न्स दैट द ह्यूमन इंड्यूस्ड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फ्रेश वाटर, जिस तरह से यूजेस हो रही है फ्रेश वाटर की, उसकी क्या इम्पैक्ट है हमारे अर्थ सिस्टम पे और हमारे सोसाइटी पे. दैट इज व्हाट दिस एडिटोरियल कॉल्स अबाउट एंड विल बी लुकिंग इनटू द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस एज वेल. फ्रेश वाटर और वाटर वैल्यूएशंस की अगर बात करें, जो 4th असेसमेंट रिपोर्ट आई थी IPCC की, दैट इज इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, दे हैव हाईलाइटेड अ लिंक बिटवीन द सोसाइटल वल्नरेबिलिटी एंड द वाटर सिस्टम. सो एसेंशियली यहाँ पे ये कोशिश की जा रही है कि जो वाटर कंजर्वेशन के जो मेथड्स हैं उसके रिपोर्ट्स को भी इनकॉर्पोरेट किया जाए, सो दैट आवर फ्यूचर सस्टेनेबल वाटर यूजेस कैन बी देयर, राइट. ग्लोबल एस्टिमेशंस के मुताबिक इट हैज बीन सेड दैट सप्लाई ऑफ वाटर may have reached up to 40% by 2030, right? And the formation of 2030 water resources could be up in 2008, जहाँ पे ग्लोबल प्रॉब्लम है. इवन इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अगर आप SDG के गोल्स देखेंगे, उसमें गोल 6 के अंदर ये क्लियरली मेंशन है दैट सैनिटेशन फॉर ऑल इज समथिंग विच इज एसेंशियली रिक्वायर्ड. और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसमें क्या किया, आप इसमें टैप वाटर की जो स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, हर घर जल, दिस इज अ स्कीम विच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड, तो वो भी आप इसको के साथ कनेक्ट कर सकते हैं फॉर राइटिंग इन मेन्स, राइट. Now moving ahead with the UN World Report that is for 2021, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातों को हाईलाइट की गई है इस रिपोर्ट के थ्रू. So some of the important 5 interrelated perspective would be water sources, जो water infrastructure है उस पर ध्यान देना, water के services and affordability को बढ़ाना, water as an input to productions, socio-economic development and socio-culture value of the water. So essentially if you are writing in mains paper आप ये points जरूर incorporate करेंगे. Now, other part is inter-basin transfer project. This is a water project which has a major hydrological intervention, and this rectify the imbalances of the water availability. So, for this initiative, what the government is looking, और ये project की जो main rationale है, is to imbalance जो imbalances हो रही है water availability को, उसको पूरी तरह से control करना. Now, कुछ anthropogenic factors हैं that influence the water. And even the river channel irrigations and other consumption of water is something which is essentially required. उनकी uses को monitor करना, that is using in the right direction. And then several IBT जो inter-basin transfer है, that is across the world, not only in India, across the world ये operate करती है. Now, National River Linking Project is one of those project in construction. इंडिया में अभी recently आपने देखा है जिस तरह से किन बेतवा की project भी आई है, that is something which is creating a more or less national river ranking project. And the artificial water courses twice the length of the equator, that would be around 190. So these are some of the facts that is again relevant for your examination. World Wildlife Fund या फिर World Wildlife Natures जो है 2009 में उन्होंने सजेस्ट किया था कि जो सस्टेनेबिलिटी के प्रिंसिपल है उन पे काम करने की जरूरत है. एंड इवन बाय द वर्ल्ड कमीशन ऑन डैम दे हैव हाईलाइटेड फॉर द इंटर रिवर एंड वाटर बेसिन प्रोजेक्ट विच इज हेल्पिंग फॉर बोथ प्रोजेक्ट, जहाँ पे इंटरलिंक की जा रही है वहाँ, और जहाँ के जो पुराने प्रोजेक्ट हैं उनको भी हेल्प करती है. Some key assumptions and recommendations. Recently जिस तरह से इंटर-बेसिन वाटर ट्रांसफर की गई है, अभी रिसेंट में आपको एग्जांपल मैंने बताया कि इन बेतवा में रिसेंटली गवर्नमेंट ने इसमें 4000 करोड़ रुपीस के आसपास एलोकेट किए हैं फॉर द नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट. दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, मेक श्योर आप इसके मैप पर जरूर देख लें, इस पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जामिनेशन में. So the decision is like a questions about the hydrological assumptions, management of the fresh water in the country, and even the IBT, that is inter-basin transfer is something essentially required for the export of water from river basin to a deficit basin. अगर किन बेतवा के प्रोजेक्ट में बात करें तो बुंदेलखंड जो रीजन है वहाँ पे ट्रांसफर की जाएगी, जो कि एक वाटर डेफिसिट रीजन. यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर रिसोर्स समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पे कोशिश की जा रही है कि बाय 2016 इंडिया क्रिएट इरीगेशन पोटेंशियल ऑफ 120 मिलियन हेक्टेयर, वेयर इरीगेटेड लैंड ऑफ 93 मिलियन हेक्टेयर इज एसेंशियली रिक्वायर्ड. 19% की गैप है विच इज कमिंग फ्रॉम द कैनाल इरीगेशंस.
अगर 1950s इंडिपेंडेंस के जस्ट की बात करें तो कंट्रीब्यूशन जो थी वो सिर्फ 40% के आसपास रही है, बट बाय 2014 एंड 15 जो इरिगेशन है दैट हैज लेस डाउन टू 24%. सो दिस इज अ कंसर्न फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सेक्शन ऑल्सो अ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड. So groundwater irrigation covers 62.8% of net irrigated areas. और average water uses की अगर बात करें in India this is 38% and against 50 to 60% in the developed countries. So this is something if you're writing in mains paper you have to incorporate these points. These are some of the important points that you should note, or either you can take the screenshot of the screen also. ना मूविंग अहेड विद द एग्रीकल्चर और ग्रे वाटर वैसे वाटर को बोलते हैं जो कि इंडस्ट्री में यूज़ की जा रही है, आपने डोमेस्टिक पर्पसेस पे यूज़ किए हैं, उस वाटर को रीयूज़ किया जाना चाहिए, राइट. सो देयर इज अ कंसेप्ट regarding the grey water uses also. So agriculture sector uses little over 90% of the total uses in India. So consumption जो industrial plants में use होती है उनके 2 to 3 times higher होती है compared to their production in any other countries, right. Similarly, जो sectors है that is expected to have 30 to 40% of the loss of the water due to leakages. तो जो water damage leakages की वजह से हो रही है उसे भी हमें fix करने की ज़रूरत है. And grey water is hardly used in our country. We do not have such mechanism. हमारे पास ऐसे instruments नहीं है, tools नहीं है जिससे हम grey water को वापस से use कर सके. But most developed countries are using this mechanism. So the estimated cost is that 55 to 75% of the domestic water in turn have a grey water dependence in their use, habits and climatic conditions, right. So these are things that you need to know about the grey water uses. Now what is the way forward how this editorial can be concluded? तो सबसे पहली ज़रूरत है कि एक hybrid water management system बनाया जाए. This hybrid management system is something again relevant for your mains paper also. यहाँ पे mains में भी सवाल पूछे जा सकते हैं आपसे. तो प्रोफेशनल और पॉलिसी मेकर्स को ये ज़रूरी है कि वो एक हाइब्रिड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम बनाए जो कि ये सारी चीज़ों पे काम कर सके. एंड इवन देयर इज अ नीड टू हैव अ डिमांड सप्लाई गैप इन मेनी प्लेसेस, द रिमेनिंग एरिया स्कैर्सिटी एंड यूजिंग द स्मॉल प्रोजेक्ट्स, राइट. इवन द वाटर प्रोजेक्ट आर पोटेंशियली चार्ज विद मैनिफेस्ट, जहाँ पे सोशल रिलेशंस, सोशल पावर और टेक्नोलॉजी को भी इनकॉर्पोरेट की जा सकती है. सो दिस इज अ पार्ट दैट यू कैन इंक्लूड इफ यू आर राइटिंग इन द मेन्स पेपर एज अ कंक्लूजन. Now moving ahead with the MCQ questions of the day. Before I proceed, just to tell you the answer of yesterday question. For first question, the correct option is C. For second question, the correct option is C again. Today's MCQ for practice: making peace with nature is reportedly published by which among the following organization, whether it is UNEP, IPCC, Food and Agriculture Organization, or World Wildlife Fund for Nature. If you know the correct answer, it is well and good. If you don't know, you can check out in the blog also, or you can Google it. Now the second is vertical launch short range missile, ASFS missile. It is an indigenously designed by the DRDO. It is capable of neutralizing aerial threat and close range sea skimming target. So these are some of the important questions that you need to practice in your home. Apart from this, if you have any other concern, let me know. I'll be more than happy to assist you. For time being, I'm signing off. Thank you so much for watching this video.